Good morning, ladies and gentlemen. On behalf of the Department of Transport, Delhi Government, I welcome you all to this brief but momentous occasion when the fruition of an ambitious project of shifting all its transport services in the capital online is coming to a close. In the last 6 years, a dramatic change has occurred in online delivery of transport services. It began with the facility to submit online the applications for the driving license, etc., which was a huge success. The Delhi Transport Department was able to clear 64% of the 77,000 online applications it received for services related to driver's licenses and vehicle registration certificates in February and March this year. And the Delhi government then offered doorstep delivery of services to all by dialing 1076. You can now avail around 70 transport services sitting in the comfort of your home by clicking a button. And today, with the launch of its services, the Delhi Transport Department covers 90% of all services across RTOs in the state. The aim was to decongest all the 13 regional transport offices in the city, allowing the common people to get important documents, including renewal of driving licenses or transfer of vehicle ownership, etc., from the comfort of their homes. The transformation to faceless services or online services was enabled through technology and regulating change, and it has made a huge difference. And today, the Delhi Transport Department authentication processes involve integrating with the Aadhaar, and this data is available online, and the addition of the So it's very clear that under the leadership of the Chief Minister, who we have with us, Mr. Arvind Kejriwal, together with the Minister Transport, Mr. Kejriwal, the Department of Transport has planned this as the biggest reform package. Trials and testing of the software has been going on for several months, as I mentioned to you, and the goal is to shift all transport services online. We'll share with you details very soon. Ladies and gentlemen, we'd like to welcome in our midst the Honorable Chief Minister. I'd like to request Mr. Ashish Kundra, the Principal Secretary, come Commissioner Transport, to please welcome him with flowers. We'd also like to welcome the Honorable Minister for Transport, Mr. Gehlot. May I request Mr. S.B. Deepak Kumar, the Special Commissioner, to welcome the Chief Secretary, Mr. Dev, and Mr. K.K. Daya, Special Commissioner, to please welcome Mr. Verma, Ms. Verma. As I mentioned earlier, the Delhi government came up with a plan to make nearly 70 essential transport services completely online in 2 phases. What really comes to your mind when you think about the transport office, the regional transport office, is immediately you think of a long queue, you think of a crowded public building which is filled with people frantically moving around from counter to counter. You've got long queues, the smell of dusty files, and of course the sound of the clicking computer keyboards. To radically change this scenario and make it easy for citizens and face the many challenges that were there to come around this, the Delhi government evolved a plan to go faceless, a huge step in digitalization and citizen convenience. So what that means is that you no longer have to stand in long queues or waste a whole day to get your work done or visit the RTOs repeatedly. So I'm sure that you're all excited to know more about this, and I'd like to invite the Principal Secretary and the Commissioner Transport, Mr. Ashish Kundra, to please share with us in brief an overview of the first of its kind project, Faceless, by the Department of Transport, Delhi government. Mr. Kundra. Good morning, sir. Welcome in our midst. Security कर्मियों से मैं थोड़ा दरखास्त करता हूँ थोड़ा साइड हो जाए, वो स्क्रीन पे नज़र नहीं आएगा. So I'll just run through a presentation, brief presentation which gives an overview of what we have done.
Sir, just to give a scale, first of all, sir, the transport department is a department which touches the lives of everyone. Nearly 30 lakh transactions happen annually. 3 million transactions we are talking about, sir. 11 lakh people avail driving license related services. 18 lakh people, nearly 19 lakh people get registration certificates. All put together, sir, 2019, this was the number. So the journey of faceless we have to kind of figure out from 2015. 2015 में सर लंबी कतारें लगती थी दफ्तरों में. उसके बाद सबसे हम ताला लगा रहे हैं, हम आरटीओ पे ताला नहीं लगा रहे हैं, हम भ्रष्टाचार और घूसखोरी पे ताला लगा रहे हैं। लंबी लंबी कतारें जो हमारे ऑफिस में लगा करती थी उनको खत्म कर दिया। आपको कोई छुट्टी लेने की जरूरत नहीं है, कोई नौकरी कर रहा है उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं है। आप जहाँ भी हैं आपके पास इंटरनेट होना चाहिए, कंप्यूटर की सुविधा होनी चाहिए और आपने अपने हमारे ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट की जो साइट है उस पर जाना है। वो सर्विसेज पे जो जो चीज़ें जैसे स्टेप वाइज एक्सप्लेन किया हुआ है वो जाना है। आपके आधार से लिंक जो मोबाइल नंबर है उस पर OTP आएगा और उसके द्वारा ही आपका ऑथेंटिकेशन हो जाएगा। सरकार आपके घर जा रही है आपको सर्विस देने के लिए, आपको सरकार के पास आने की आवश्यकता नहीं है। मतलब अगर हम इसको इस तरीके से कहें कि हर घर में आज के दिन सरकारी दफ्तर है, आप अपने घर बैठ के वर्क एट होम बिना किसी परेशानी के, किसी आपको लाइन में नहीं लगना, किसी अधिकारी से नहीं मिलना और किसी और चीज़ों में टाइम खराब नहीं करना। 19 फरवरी को जो हमने जो ये ट्रायल स्टार्ट किया और आज लगभग 5 महीने से ज़्यादा पूरा हो गया, तो 5 महीने के अच्छे ट्रायल के बाद, अच्छी टेस्टिंग के बाद हम इसको ये पब्लिकली लॉन्च कर रहे हैं। 3 लाख सर्विसेज हम रिसीव कर चुके हैं और आपको ये खुशी होगी जानकर कि 80% से ज़्यादा हमारा सक्सेस रेट है। तो अगर आपको कहीं भी कोई दिक्कत आती है तो आप हमारा जो 1076 की जो सेवाएं हैं जहाँ भी हैं आप उसको ले सकते हैं। अपने हिसाब से अपॉइंटमेंट लेके आपका पूरा फॉर्म फिलअप और जो भी डॉक्यूमेंट अपलोड होने हैं वो डॉक्यूमेंट अपलोड करेगा आपके लिए। जब पहला लॉकडाउन हुआ और उसमें हमने 1.5 लाख ऑटो ड्राइवर्स को, जो पैरा ट्रांजिट व्हीकल के ड्राइवर्स हैं, उनको घर बैठे हमने 5-5 हज़ार रुपये का, क्योंकि CM साहब का ये था कि भाई अब लॉकडाउन चल रहा है तो ये गरीब लोग हैं इनको कष्ट ना हो, तो हमने 1.5 लाख लोगों को 5,000 रुपये हमने उनको घर बैठे, हमने उनको कहीं नहीं बुलाया, पूरा सॉफ्टवेयर बनाया, सारी ऑनलाइन एप्लीकेशन हमने की, उनकी जो स्क्रूटनी थी वो हमने ऑनलाइन की। तो वहाँ से हमारा फिर ये हमें कॉन्फिडेंस मिला कि अगर हम ये चीज़ कर सकते हैं तो ट्रांसपोर्ट की जितनी भी सर्विसेज हैं हम उनको फेसलेस कर सकते हैं, कम्प्लीटली ऑनलाइन कर सकते हैं। हमने वादा नहीं किया है सर, हमने ये करके दिखाया है कि किस प्रकार से जो एक सपना था उसको हकीकत में कैसे हमने उसको बदला। Sir, these are some of the images of what our offices used to look like before we started this faceless. Next. And post faceless, sir, these are empty offices. These are real images which we have taken, sir. Next. बिजनेस है वो एक्सपोर्ट का बिजनेस है। मेरा लाइसेंस एक्सपायर हो गया था, किसी ने मुझे बताया, दिल्ली गवर्नमेंट ने कुछ किया है अपने आरटीओ में। मैंने फिर चेक किया, फेसलेस सर्विसेज का मुझे पता चल गया, दिल्ली गवर्नमेंट ने शुरू किया है, तो सीधा मैंने अप्लाई कर दिया। वेरी वेरी वेल डन, आई वाज सो रिलीव्ड एंड एवरीथिंग वाज सो क्विकली डन। 20 मिनट में मेरा सब काम खत्म हो गया। 1076 में अपने मोबाइल में टेलीफोन कर दीजिए, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट के बंदे उसके घर में आ जाए। आई विल गिव देम फुल मार्क्स, दिल्ली गवर्नमेंट कैसे आपने किया है, आई एम वेरी वेरी ग्रेटफुल।
I think, sir, that's pretty much it, sir. I would like to thank our partners, NIC, DG NIC is here, ICICI Bank, and most of all, sir, I think the team transport, the MLOs, who have not only risen to the occasion, but also had a major change in mindset and approach, sir. That is a big salute to them. To India Post, which is our partner for delivering these services, and I'm grateful to everybody, sir. Thank you, sir. I think they deserve a bigger round of applause, ladies and gentlemen. Thank you very much. May I now request the Chief Secretary, Mr. Vijay Kumar Dev, to please say a few words. Honorable Chief Minister of Delhi, Honorable Minister of Transport, Commissioner of Transport, Mr. Ashish Kundra, DG NIC, who is present here today, Special Secretary, Mr. S.P. Deepak Kumar, Mr. Daya, all the stakeholders, ICICI, and all the team members of Transport Department. At the outset, let me convey my heartiest compliments to the Transport Department for completing this long and arduous journey from long queues to no queues. And I think this milestone which has been reached today of faceless delivery of services is a very, very important milestone because it is an harbinger of the digital delivery of services which is going to happen in the entire country after seeing this example of Delhi. In fact, I say that in Delhi, the digital delivery of services is one of the most important thrust areas of governance in Delhi. And across departments, we have undertaken a very, very intensive drive so as to find out what are the rules, regulations, orders which result in problems for the citizens, which result in compliance burden on the citizens, which result in huge transaction costs for the citizens. And you would be delighted to know that across departments, under the program of ease of living for the citizens, a subset of which is ease of doing business. So this ease of living encompasses both government to business services and government to citizen services. More than 596 such transactions have been identified across departments, which we feel have to be removed across departments. So these are intensive reforms, and I'm very happy to say that across departments, all these transaction cost related obstacles which were there, except some of the reforms which were relating to labor departments and which are now part of the new labor code which is being launched by Government of India. 110 services belong to that. So as soon as the Government of India finalizes the labor code, those 110 services will also get the delivery of that will be completely online. 596 services across departments have been made compliance burden free. So huge work is being done across departments, whether it is revenue department or labor department or transport department. And transport department has come out as one of the largest reformers. So I take this opportunity
compliment the NIC, whose DG is here today, for not only in this transport department's initiative, but in all our initiatives across departments. NIC has been our very, very valued partner, and we are receiving complete cooperation from NIC in that regard. ICICI also, as has been told, has become a partner with us in this particular event which is being organized today. So my compliments to all of you, and we give this assurance to the citizens of Delhi that we are committed to ensure that across departments we give them services in a faceless manner. Thank you very much, Jai. Thank you very much, Mr. Dave. I'd like to now request the Honourable Minister for Transport, Delhi Government. ICICI Bank is here. Mr. Manoj, who is the president of ICICI Bank. Mr. Raman from ICICI Bank is here. They have worked really hard last few days. तो बैंक ना तो बैंक वाले को आने की जरूरत है सर, ना एप्लीकेंट को आने की जरूरत है. The entire process is automated. Through this platform, I would also like to request other banks, HDFC है sir, SBI है, and all other banks, that they also do what ICICI has done. We are willing to partner. NIC is here, and I think sir we can prevent a lot of visits जो कि सिर्फ क्योंकि सर अगर किसी को सर टर्मिनेशन कराना है अपना हाइपोथिकेशन का, इनफैक्ट आई है वो व्हीकल 2 महीने पहले जिसका हाइपोथिकेशन टर्मिनेट कराना पड़ा, तो सर माय पर्सन वेंट टू द बैंक 3 टाइम्स सिर्फ वो एनओसी लेने के लिए. तो सर 3 चक्कर तो वहाँ लगे, और फिर वो एनओसी लेके ही वुड कम टू द ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट, और वहाँ पर ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में फिजिकली वो एप्लीकेशन सबमिट करता है, और फिर उसके बाद वो टर्मिनेशन वो होती है सर. So it's absolutely sir hassle free. So if you permit, I would like to share one more experience. सर शुरू में जब लोगों से मुलाकात की स्टार्ट की, तो लोग एक चीज सर कहा करते थे, चीफ सेक्रेटरी ऑल्सो हियर, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ऑल्सो हियर, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में काम बिना सर दलाल के नहीं होता है. तो सब मन में बड़ी बड़ी पीड़ा हुआ करती थी कि भाई अगर हम आज़ादी की बात कर रहे हैं, आज 75th ईयर सर इंडिपेंडेंस में है, अगर किसी व्यक्ति को इतनी आज़ादी नहीं कि वो किसी ऑफिस जाके अपना अधिकार समझ के वो सर बिना किसी मिडलमैन के, बिना किसी दलाल के अगर वो काम करा सके, तो सर मेरे ख्याल से हम आज़ाद नहीं है. एंड आई थिंक सर अंडर योर गाइडेंस, अंडर योर लीडरशिप, आई थिंक सर दिल्ली को हम इससे बढ़िया आज़ादी के सर इस माहौल में इससे बढ़िया सर हम गिफ्ट नहीं दे सकते थे. आई थिंक दिस इज द बेस्ट गिफ्ट which you could have given, we could have given
सर दिल्ली सरकार जना की है और उनको सर ये सर्विस जो है सर ये समर्पित है। बहुत बहुत धन्यवाद सर। Thank you very much, Mr. Gehlot. I'd like to now request the Honorable Chief Minister of Delhi, Mr. Arvind Kejriwal, to address the audience. Ladies and gentlemen, the Chief Minister. दिल्ली के ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर श्री कैलाश गहलोत जी, दिल्ली के मुख्य सचिव श्री विजय देव जी, हमारे ट्रांसपोर्ट कमिश्नर प्रिंसिपल सेक्रेटरी ट्रांसपोर्ट श्री आशीष कुंद्रा जी, स्पेशल कमिश्नर्स, दिल्ली सरकार के अधिकारीगण, सभी मीडिया के साथी और सभी भाइयों बहनों, आज दिल्ली सरकार के लिए स्पेशली एक बहुत अच्छा दिन है। ये अभी हम दूसरा क्रांतिकारी कदम शुरू करने जा रहे हैं। आज सुबह सुबह 10:30 बजे हम लोगों ने दिल्ली के शिक्षा विभाग ने अंतर्राष्ट्रीय बोर्ड है एक एजुकेशन का, जिसके साथ करार करने के लिए स्कूल्स और सरकारें जो है वो बहुत ज़्यादा लालायित रहती हैं, उनके साथ हम लोगों ने एग्रीमेंट किया है, जिसके बारे में मैं आज 4 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताऊंगा। बहुत ऐतिहासिक कदम है और अब हम लोग ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में ये फेसलेस सर्विसेज का शुभारंभ करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। सबसे पहले मैं दिल्ली के लोगों को बधाई देना चाहता हूं। एक ज़माना था जब अगर आपको ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में लाइसेंस बनवाना होता था तो घर के अंदर बड़ी टेंशन होती थी कि अब क्या करें, किसको पकड़ें, किससे सिफारिश करवाएं, किस दलाल को पकड़ें। छुट्टी लेनी पड़ती थी, एक बार जाते थे, लाइन में लगते थे, फिर कुछ ऑब्जेक्शन लगा दिया जाता था, फिर दूसरी बार लाइन में लगते थे, फिर तीसरी चौथी बार आदमी सोचता था यार किसी दलाल को ही पकड़ लो। फिर आदमी दलाल को पकड़ता था, बड़ा मुश्किल था काम करवाना। 2015 के पहले का वो सिनेरियो था। अभी जो आपने तस्वीरों में देखा कि लंबी लंबी लाइनें, खचाखच भरे हुए हैं, पसीने में लथपथ हैं। फिर 2015 में एक आम आदमी पार्टी की सरकार आई। जैसा अभी आपको पूरी यात्रा दिखाई गई, 2015 में कुछ कुछ छोटे छोटे रिफॉर्म्स किए, 2018 में एक बड़ा रिफॉर्म किया, डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज। उसमें इतना किया कि डिपार्टमेंट ऐसा ही रहा, एमएलओ भी थे, आरटीओ भी थे, दफ्तर भी थे, फाइलें भी थी, सब कुछ था। पर इतना कर दिया भाई अब आपको दफ्तर आने की ज़रूरत नहीं है, 1076 पे फ़ोन करो, हमारा एजेंट आपके घर पे आएगा, वो आपके सारे कागज़ ले जाएगा, आपसे एप्लीकेशन फॉर्म भरवा लेगा, आपसे फ़ीस ले जाएगा और आरटीओ या एमएलओ के दफ्तर आके आपका काम करा के आपके घर पे आपका लाइसेंस दे जाएगा। वो भी एक बड़ा रेवोल्यूशनरी कदम था जो दिल्ली के अन्य विभागों में लगभग 150 से ज़्यादा सर्विसेज इस टाइम दिल्ली सरकार की डोर स्टेप डिलीवरी ऑफ सर्विसेज पे चल रही हैं। आज जो किया है हम लोगों ने, ये एक तरह से जब हम कहते हैं 21वीं सदी का भारत, जब हम टेक्नोलॉजी की बात करते हैं, जब हम आधुनिकता की बात करते हैं, ये उस दिशा में एक बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है। आज जो कर रहे हैं, अब दफ्तर नहीं बचे, दफ्तर खत्म, फाइलें नहीं बची, फाइलें खत्म। अब 1076 वाला आपके घर आके आपसे कोई कागज वागज नहीं लेके जाएगा। अब आप अपने घर बैठे कंप्यूटर खोल के और आप सारे काम करा सकते हैं, ट्रांसपोर्ट विभाग के सारे काम आप करा सकते हैं। कोई कागज नहीं, कोई फाइलें नहीं, कोई लाइनें नहीं। अब आपको छुट्टी लेने की जरूरत नहीं है, अब आपको बिचौलिए पकड़ने की जरूरत नहीं है, आपको दलालों के चक्कर काटने की जरूरत नहीं है।
आप सीधे कंप्यूटर पे जाके अपना काम करा सकते हैं। आप लोग अमेरिका जाते हैं, जब वापस लौट के आते हैं तो आप वापस आके अपने यार दोस्तों रिश्तेदारों को क्या कहते हैं? यार वहाँ तो सारे काम ना कंप्यूटर पे बैठ के सब घर बैठे हो जाते हैं। पता नहीं अपने भारत में ऐसा कैसे होगा। अब आप जब अमेरिका जाएं तो बोल देना हमारे भारत में भी ये शुरू हो गया सिस्टम, ये वाला चालू हो गया सिस्टम, दिल्ली में चालू हो गया और अब पूरे भारत देश में भी होगा। अब घर बैठे कंप्यूटर के ऊपर ये सारे काम हो जाया करेंगे। जैसा भी बताया गया, केवल 2 चीज़ हैं जिसके लिए आपको विभाग में आना पड़ेगा। पहली चीज़, अगर आपको ड्राइविंग टेस्ट देना है, आपको अपॉइंटमेंट मिल जाएगा, ऑनलाइन अपॉइंटमेंट मिल जाएगा, अप्लाई कर दो, सब कुछ कर दो, फीस भर दो, अपॉइंटमेंट मिल जाएगा, आप आके अपना ड्राइविंग टेस्ट वहाँ जाके दे सकते हैं। और दूसरा, अपनी गाड़ी की फिटनेस चेक करानी है तो गाड़ी लेके तो आनी पड़ेगी आपको। बस ये 2 चीज़ों के अलावा अब आपको ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट में आने की ज़रूरत नहीं है। और इसी डायरेक्शन में, जैसे अभी चीफ सेक्रेटरी साहब ने बताया कि सारे विभागों के अंदर ये एक्सरसाइज चल रही है। ट्रांसपोर्ट विभाग से शुरू हुआ ये काम, अब सारे डिपार्टमेंट्स के अंदर सब कुछ ऑनलाइन कर दिया जाएगा, सब कुछ फेसलेस कर दिया जाएगा। सो ये बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है। ये तभी संभव था जब एक अच्छी नीयत वाली सरकार यहाँ बैठी है। पहले कहा करते थे, सुना करते थे, असलियत क्या थी पता नहीं, पर कहते थे कि जो वो दलाल का पैसा है ना वो ऊपर तक पहुंचता है। अब पता नहीं पहुंचता था कि नहीं पहुंचता था, लेकिन अब ऊपर तक नहीं पहुंचता है। अब ये जितने बैठे हैं ना, ये पैसे नहीं खाते, और जब ये पैसे नहीं खाते तो फिर पैसे दलालों की जरूरत ही नहीं है। हम सिस्टम ऐसा बनाना चाहते हैं कि बिना दलालों के, बिना रिश्वतखोरी के सिस्टम काम कर सके। सो दिल्ली के लोगों को फिर से बहुत बहुत बधाई, बहुत बड़ा क्रांतिकारी कदम है। और इसी तरह से आपकी सरकार, जैसा भी ट्रांसपोर्ट मिनिस्टर ने बड़ी अच्छी बात कही कि आज़ादी के 75 साल पूरे हो गए, लेकिन असली आज़ादी तो तभी मिलेगी जब दलालों से आज़ादी मिलेगी, बिचौलियों से आज़ादी मिलेगी, लाइनों से आज़ादी मिलेगी, रिश्वतखोरी से आज़ादी मिलेगी, और वो सिलसिला अब शुरू हो रहा है। बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। Thank you very much, Chief Minister, sir. Congratulations to the Department of Transport. May I request all the media persons to please